Are you a healthcare professional? Are you a nurse? Are you a doctor? Are you a radiographer? Are you a speech pathologist? All right. If you are any of these, or for that matter, if you are a healthcare professional, then OET is the right choice for you. And you are, my dear, at the right channel. Hi, I am Neha Sharma, one of the OET IELTS trainer, and I am going to start a small doubt session on OET today. So here we start. Okay, so I have couple of questions in OET that people hassle with, and needless to say, I'm going to keep this video bilingual again so that I can reach the masses. So हम दोनों लैंग्वेज में रखेंगे इस वीडियो को भी, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों. All right? Okay. On this note, so in our today's video, we are going to take up few questions जो कि बहुत frequently candidates पूछते हैं, जो doubts clear करना चाहते हैं, जो OET देना चाहते हैं, OET aspirants, healthcare professionals, doctors, nurses, physiotherapists, radiographer. If I am a candidate, I will be having hell lot of questions in my mind. I will be having list of questions in my mind. So today, guys, in this video, we are going to talk about all your questions, possible questions, and I have the list, of the questions that people normally have asked me, and इसके अलावा भी we can take a few more questions. अगर आपके mind में कोई भी questions हैं, do not forget to write me, message me. I will definitely address to those questions. Okay. Okay. On this note, so we start with our first question. So that is, how should I use my 3 minutes of preparation time? I have already answered this in my earlier vlogs also, but I would like to take this opportunity to explain it further. तो ये 3 minutes जो आपको मिलते हैं speaking के लिए, इनमें you have to do nothing, means you have to just simply read your roll card several times. तो आपको अपना roll card अच्छे से पढ़ना है, 1 बार 2 बार 3 बार, और आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है mentally that आप कैसे किस ऑर्डर में क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करोगे. तो आई विल बी सजेस्टिंग कि जब मैं स्पीकिंग के लिए प्रिपेयर कराती हूँ OET स्पीकिंग के लिए, तो मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ OET स्पीकिंग को. जैसे फर्स्ट हो गया आपका इंट्रोडक्शन. जब आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि हाय, आई एम नेहा शर्मा, वन ऑफ द रजिस्टर्ड नर्सेज वर्किंग इन दिस सेटिंग, हॉस्पिटल सेटिंग और वॉट एवर योर रोल कार्ड इज़. और सेकंड होता है फिर इसके बाद में आपकी प्रोबिंग, जिसमें यू आस्क्ड क्वेश्चन, यू आस्क्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन, यू आस्क्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. अगर आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का डिफरेंस नहीं पता है, लेट मी नो. प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. आई एम गोइंग टू टेक दिस अप इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. ओके. सो सेकेंड आई एम सेइंग कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ये फर्स्ट पार्ट में आपका इंट्रोडक्शन हुआ जब आपने अपने को इंट्रोड्यूस किया एज एन. क्यों इम्पॉर्टेंट है इंट्रोड्यूस करना? इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें जो रोल कार्ड मिलता है उसकी सेटिंग अलग अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल, सेटिंग मीन्स कि वो पेशेंट जो है जिससे आप इंटरेक्ट करोगे, वो पेशेंट है कहाँ. इज़ द पेशेंट एडमिटेड, और एल्स इफ़ द पेशेंट इज़ इन OPD setting, or you are a community nurse and you are paying a home visit. तो इसीलिए आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट कहाँ पर है, सो दैट आप अपना पहला क्वेश्चन अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर पाओ. ठीक है. अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, जो मैंने बोला प्रोबिंग करनी है. प्रोबिंग मतलब आस्किंग क्वेश्चंस. अब आपको सारे क्वेश्चंस, चाहे वो हाना वाले क्वेश्चंस हों, क्लोज्ड एंडेड बोलते हैं हम उनको, या फिर वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो जो कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको इस सेगमेंट में पूछने हैं. दैट मीन्स ऑनसेट ऑफ द डिसीज़, पेशेंट का कोई ट्रिगर फैक्टर, कब से स्टार्ट हुआ, क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके कंसर्न्स, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हम इस सेगमेंट में पूछते हैं. ठीक है. बट येस, यू नीड टू मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाओ, क्योंकि यू ऑल्सो हैव अ टाइम काउंट ओवर हेयर. तो 5 मिनट्स में आपको उससे क्वेश्चंस भी पूछने हैं, आपको उसको सोल्यूशन भी देना है. सो कीप इट दैट वेज. ओके. नाउ द थर्ड फाइनल पार्ट इज़ कि हमने उसको सोल्यूशन दिया.
obviously the patient is coming to us, he is looking for a solution, right? He is looking you to provide um, some guidance or possibly some treatment, or else if you find कि he needs to be referred to a doctor, तो ये इसी के लिए patient आपके पास आ रहा है. So the third part, an important part, is whatever advices you have to give or whatever solution you have to offer, आप वो उस part में करो. तो मेरा speaking 3 parts में divided होता है, so that कि मेरे students को बहुत clear होता है कि उन्हें कैसे अपना speaking पूरा cover करना है, सारे टास्क कवर करने हैं, और वो टाइम फ्रेम के अंदर अपने प्रॉपर टाइम फ्रेम के अंदर उसको प्रॉपरली कवर कर पाते हैं. ओके, सो if you ask me how I'll be using my 3 minutes, coming back to this question, I will be just reading my roll card 2-3 times. I will understand क्या scenario है, and then I will be making some notes with a pencil on the same roll card for me. I will not be writing complete sentences. Please listen to me. आपके पास 2 या 3 minutes होंगे, तो 3 minutes के अंदर आपके लिए possible नहीं है कि आप पूरा roll card अपना लिख पाओ. तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ मेन हाईलाइट पॉइंट्स बनाते हैं, जैसे हम बुलेट्स बनाते हैं, बुलेट पॉइंट्स ऐसे ही हम बनाते हैं, सो दैट कि हम एक बार रिकॉल कर पाएँ, क्योंकि कई बार व्हेन वी स्पीक ना, वी टेंड टू फॉरगेट कि क्या बोलना है नेक्स्ट. तो वो रिकॉल करने के लिए बस मैं एक बुलेट पॉइंट्स बनाती हूँ अपने पास कुछ. ठीक है, सो इन 3 minutes आई विल बी डूइंग दीज 2 things. आई विल बी प्रॉपरली रीडिंग माई रोल कार्ड 2 times 3 times जो भी है, एंड उसके बाद मैं ये छोटे छोटे नोट्स और बुलेट पॉइंट्स अपने लिए बनाऊंगी, सो दैट कि मुझे एक डायरेक्शन मिलती रहे जब मैं रोल कार्ड पे बात करूँ, कॉन्वर्सेशन करूँ, कि टुवर्ड्स विच साइड आई हैव टू फॉलो, टुवर्ड्स विच साइड आई हैव टू गो एक्चुअली. ओके, ऑल राइट. So, my next question is, can I see the card during my role play? So, during your role play, definitely you will be having your role card for the entire time in front of you. All right. So, yes, there is no need कि आप उसको cram करो, आप उसको mug up करो, या आप स्ट्रेस लो कि मैं भूल जाऊँगा पॉइंट्स या मैं भूल जाऊँगी पॉइंट्स. दैट रोल कार्ड विल बी इन फ्रंट ऑफ यू ओनली पूरे 5 minutes जब तक आपकी कॉन्वर्सेशन चलेगी. सो यू नीड नॉट हैव टू वरी ऑन दैट. ओके, थर्ड इज हाउ डज स्पीकिंग वर्क फॉर OET on computer? So let me tell you, there is no major difference. Whether you are giving your OET exam pen and paper based, whether you are giving your OET computer based, it will be completely same. You don't have to worry about whether you should give पेन एंड पेपर बेस्ड तो वो इजी रहेगा या कंप्यूटराइज टेस्ट तो वो इजी रहेगा. नो माय डियर, द स्ट्रैटेजी, द लेवल, एवरीथिंग विल बी सेम. द चेकिंग क्राइटेरिया, एवरीथिंग विल बी सेम. ओके, so it's completely your wish whether you would like to go with pen and paper based or whether you would like to go with computer based test. Okay, now let's move to our next question, that is, how should I start the role play? Now that's very important. As I said earlier also, relationship building is the very first criteria you need to look after when you are taking you're speaking, right? Because sometimes what people do, what candidate do, वो बहुत एंक्शियस हो जाते हैं और उस एंग्जाइटी के अंदर वो क्या करते हैं, उनको लगता है मेरे को अपना कार्ड कंप्लीट करना है. अपनी कॉन्वर्सेशन करते वक्त वो याद ही नहीं रखते कि सामने वाले की एक्सेप्टेंस, सामने वाले का फीडबैक देना, उसका रिप्लाई करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. सी फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक अच्छी कम्युनिकेशन, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो, द थंब रूल इज सेम. इट इज़ टू साइड कम्युनिकेशन, टू साइड कॉन्वर्सेशन, जिसको हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं. तो आपका सुनना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका बोलना है. तो आपको सिर्फ बोलना नहीं है, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट से पूछो, पेशेंट क्या बोल रहा है, उसको एड्रेस करो, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू रिप्लाई बैक. सो व्हेन आई से that how should I start my role play, it's very simple. I will be keeping in mind कि क्या setting है, उसके हिसाब से मुझे question पूछना है कि patient IPD में है, OPD में है या फिर ये home visit है. Then the next thing is patient के concerns क्या हैं, उन concerns को
ध्यान में रखते हुए उन कंसर्न्स को सुनने के बाद यू हैव टू ऑफर योर नेक्स्ट, यू हैव टू आस्क योर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू ऑफर द सोल्यूशन टू इट. ओके, सो दैट रैपो बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पेशेंट आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, अगर आप पेशेंट के साथ वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बना पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट बोल रहा है आई वॉजेंट एबल टू स्लीप लास्ट नाइट क्योंकि मुझे इतना पेन था, एंड आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके माइंड में रोल कार्ड चल रहा है, यार मेरे को नेक्स्ट पॉइंट पे बात करनी है. तो आपने क्या किया, आपने उससे पूछा ओके फाइन, सो कैन आई आस्क यू दैट इज दिस द फर्स्ट टाइम यू हैव एक्सपीरियंस्ड सच पेन नाउ. That sounds very rude. That is absolutely rude. What that shows that you have no empathy, right? So here ideally what you're supposed to do, आपको वहाँ थोड़ा सा पॉज लेना था and you should have shown your concern. आपको यहाँ पे sympathize करना था. Oh, I'm really sorry to hear that, sir. That must be very difficult for you. I can completely understand. It's just a 2-second thing, but that will make your this whole roll card, will give it an edge to your roll card, and that will make it sound you make more empathetic. The patient will respect that yes, you are actually not just listening to him or her, but you are actually understanding and you are feeling that pain, right? So that is very important. So this is how we are going to start with our roll card, and this is what we are going to keep in our mind for throughout speaking. Okay, so on this note, let's move to the next question. What if I don't know about the condition in the role play task? That is completely okay, my dear. See, practically speaking, it is not possible that you might remember each and everything that you have studied during your medical preparation. It is not possible, right? But here आपको डरने की बात नहीं है. इसमें आपको जितना रोल प्ले में रोल कार्ड में दे रखा है, आपके एग्जामिनर जो है सिर्फ उतना ही पूछेगा. सो यू नीड टू बी थॉरो विद the information that is given in your roll card. You don't have to revise the concepts again. You just have to read that piece of roll card properly and need to address the questions that the examiner is asking from that roll card. That's all. Okay. So what do the brackets on the role play card mean? So bracket, if some information in your roll card is given in the bracket, right? We always use that information for suggesting the information for your additional understanding. Means that is not a part of this main roll card, but कुछ information ऐसी है जो आपकी better understanding के लिए वो देना चाहते हैं, आपको hint देना चाहते हैं, so that you can adapt or absorb the roll card in more appropriate way. तो वो information वो ब्रैकेट में दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन योर रोल कार्ड इट इज़ मैंशन दैट द पेशेंट हैज़ बीन ऑलरेडी ऑन सेवरल medications, your unprescribed medication. So under bracket they have given the names of the medicines. So that suggests कि she is taking or he is taking some medicines जो कि unprescribed है, डॉक्टर से consulted medicines नहीं है, और एक medicine नहीं है, there are several medicines that she is taking. So that suggests the information only for your understanding, so that जब आप roll card ले रहे हो तो it is easy for you to understand and recollect the information that you are getting from the patient. Okay? All right. So, what if I don't finish all the tasks on my card? Not acceptable. It is very important for you to complete all the tasks that are given in your roll card. Reason being, this is the parameter on the basis of which you will be assessed. So task completion is one of the assessment criteria that you're supposed to fulfill. So it is really important that if 2 points, 3 points, 4 points or 5 points are given in your roll card, you need to complete all the points when you are having this conversation. Sequence definitely is your choice. You can select the sequence कि आप पहले किस बारे में बात करोगे, secondly किस बारे में बात करोगे, thirdly किस बारे में बात करोगे. That is completely your choice. लेकिन वो cover होना चाहिए. ठीक है?
All right, so on this note, we end the doubt session here. And if, as I said, agar you have some doubts, you want to ask some questions, you have some queries, or you are the aspirant who is about to write an exam lately or recently, you can always drop your doubts or your messages to me and I will address them back. If you are about to write an exam and if you're looking for some suggestions, you're most welcome. All right, in tuned, subscribe my channel if you haven't done that, and stay in touch till my next video. Please like and subscribe it, and we are going to catch up again in our next video. Stay tuned. This is Neha Sharma signing off for today.